deliberation on strength and conditioning. So we have with us expert from Sport Authority of India, Mr. Dheeraj. He is a scientific officer, strength and conditioning coach working in Sport Authority of India, and he's having a lot of coaching qualification from India and abroad as well, right? So, ladies and gentlemen, let me take this opportunity to welcome a very young, energetic speaker for the session, Mr. Dheeraj. So, like he's going to talk about the strength and conditioning various stages of LTA Day, Long-Term Athlete Development Program, right? So, on behalf of Ministry of Education, on behalf of Ministry of Youth Affairs and Sports, Government of India, Sport Authority of India, and the entire team of E-Khel Pathshala from Delhi and from Sahil and CP Trivandrum, and on behalf of our principal, Sir Dr. G. Kishore, I, Dr. Naren Gangwar, would take this opportunity to welcome Mr. Dheeraj. Sir, we are really privileged and happy to see you in the session. Dear participants, I welcome you all again for the second session, and let me allow to introduce our speaker to all the participants. So he has done masters in sports and exercise science. He is a level 2 accredited Australian Strength and Conditioning Association coach. He has also acquired a AFFD license football coaching course. And when we talk about the working experience, so at present he is working as a strength and conditioning coach for men's boxing team, and strength and conditioning coach for the Institute of Sports Bellary. He worked as a strength and conditioning intern at Spire Institute of Sports Bellary, and he also spent his services to many teams and clubs, right? And he has done a lot of research publication and presentation in various national and international conferences. So, ladies and gentlemen, without further much delay, I would like to invite our speaker for the session, Mr. Dheeraj, for his deliberation. Over to you, please. Thank you, Dr. Narendra, for such a kind introduction. I will start sharing my screen now. Yeah, please. Is my screen visible now? The presentation? Yes, perfect. All set to go, please. Okay. Good afternoon, everyone. I hope all of you are doing well. I will just give a quick brief about where I'm currently working, what I've done in the past. So currently I'm working with Boxing Federation of India. I'm the head strength and conditioning coach for the men's boxing team, which is currently based in Pathshala. Before that, like sir mentioned, I was the head of strength and conditioning for the Sports Authority of India, all the NCOEs and STCs. Previous to that, I worked with JSW Sports, who has an institute in Bellary, Institute of Sports, and before that, I was working for like almost 1.5 years with a football club in UK. And previous to that, I had done my master's and my bachelor's. So that's my very short experience within this industry. Today, आज मैं आप लोगों को long term athlete development के बारे में present करूँगा, and I will present different views. बहुत सारे जो researcher हैं वो इस फील्ड में रिसर्च करते हैं कि जो छोटे एथलीट्स होते हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं जिनका स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट होता है, उनको अपना स्पोर्टिंग करियर को बेस्ट वे में एनहांस कैसे किया जा सकता है. सो फॉर दोज रीजंस देयर इज लॉट ऑफ रिसर्च गोइंग ऑन इन यंग चिल्ड्रन. सो रिसर्चर्स ने क्या फाइंड आउट किया है उस रिसर्च के बाद, this is something I will focus on bit today. Before I start the whole long-term athlete development presentation, generally मेरे experience में जब भी मैं कहीं जाता हूँ या फिर मैं नए कोचेस से मिलता हूँ, बहुत सारे कोचेस का एक क्वेश्चन हमेशा यही होता है कि जब बच्चे कोई छोटा है तब उसको क्या करना चाहिए,
कि उनको वेट ट्रेनिंग करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, अगर उनका कोई पहले से चोजन स्पोर्ट है तो उस स्पोर्ट में कितना खेलना चाहिए, कितने स्पोर्ट खेलने चाहिए। जनरली ये क्वेश्चन हमेशा उसमें आता है, लाइक डिस्कशन में हमेशा ऐसे आता है कि मैं क्या करूँ, मैं अपने बेटे या बेटी को किस स्पोर्ट में डालूं। ऐसे जनरली जो कोचेस होते हैं दे आर इवन मोर इंक्लाइन, उनको हमेशा ऐसा लगता है कि बिकॉज दे हैव बीन अ प्लेयर, दे हैव बीन अ कोच, सो उनको अपने बच्चों को भी बहुत जल्दी स्पोर्ट्स में डालना है। बट हर टाइम वो लोग प्रॉपरली ऐसे गाइडेड नहीं होते हैं कि व्हाट माइट बी द बेस्ट वे, because at the end of the day if you realize everyone wants their kids to learn a sport, but at the top there can be only one world champion or one Olympic champion, so a lot of the other kids they might not even reach international stage, they might not even become a national medalist. So फर्क कहाँ पे रह जाता है, या फिर आप अपने बच्चे को कैसे बेस्ट चांस उनके एथलेटिक पोटेंशियल को रीच करने का दे सकते हो. सो दिस इज समथिंग we will talk about today. Okay, so like the first athlete first slide mentioned, the topic for today's presentation is long term athlete development. So किसी भी एथलीट के बहुत लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट के लिए क्या चीजें इंपॉर्टेंट हैं और क्या चीजें आपको हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए. ओके, सो जब जब बहुत सारे रिसर्चर्स ने ऐसे ऑब्जर्व किया कि जो बच्चे बहुत जल्दी स्टार्ट करते हैं, थोड़ा लेट स्टार्ट करते हैं, कोई एक स्पोर्ट खेलते हैं, कोई ज़्यादा स्पोर्ट खेलते हैं, कोई पहले अर्ली करियर में भी ज़्यादा टेक्निकल ट्रेनिंग पे फोकस करते हैं, कुछ ज़्यादा फिजिकल ट्रेनिंग पे फोकस करते हैं. सो उस रिसर्च के बाद बहुत सारे फ्रेमवर्क निकल के आए हैं. सो सेवरल मॉडल्स हैव प्रोवाइडेड जनरल फ्रेमवर्क for long LTAD from different perspective that consider such as when to sample, specialize, what physical quality you train and when. So हर मॉडल ने ऐसा ऐसा बोला है कि अगर आप इस पर्टिकुलर एज ब्रैकेट में हैं तो आपको ये ज्यादा करने से बेनिफिट मिल सकते हैं. अगर आप एक पर्टिकुलर एज में है, लेट्स से 13 to 16 है, उस टाइम में आपको क्या ज्यादा करने से बेटर चांस होगा एक इंटरनेशनल मेडलिस्ट बनने का या फिर ओलंपिक मेडलिस्ट बनने का. सो अलग अलग मॉडल्स ने अलग अलग फ्रेमवर्क दिया है. फ्रेमवर्क मतलब बेसिकली एक गाइडेंस दिया है. अभी recently the more specific model of long term learning have emerged to focus both specific modes of training and specific fitness quantities. So अभी qualities, अभी जो नए और मॉडल आ रहे हैं उसमें आप ये भी बता पा रहे हैं कि आपको स्पेसिफिक ट्रेनिंग कब शुरू करना चाहिए या फिर स्पेसिफिक फिटनेस किस एज बैंड में करना चाहिए. सो लाइक थ्रू आउट द प्रेजेंटेशन यू विल सी कि during which age what you should prefer to train more. ऐसा नहीं है कि हमको एक ही चीज ट्रेन करना है, बट हर क्वालिटी की कितनी क्वांटिटी उस एज में ट्रेन करना है. So, like I mentioned, there are various models. The development model of sports participation, DMSP of Kote, the LTAD model popularized by Bali and Hamilton, the youth physical development model proposed by Lloyd and Oliver. So these are three of the more famous long-term athlete development model. So in coming slides we will see what these are model. So if you see, these are the three model: the DMSP, the Bali, Hamilton, Lloyd and Oliver. एक फ्रेमवर्क में इन्होंने दिया है. जैसे let's talk about the DMSP कोटे मॉडल. उन्होंने अपने जो पूरा फ्रेमवर्क है उसको 5 में डिवाइड किया है. फंडामेंटल्स, just see if I can point. There is a pointer. Okay, so you should be able to see a red dot now. So उन्होंने 5 ये जो ग्रीन बॉक्सेस हैं इसमें आप देखोगे तो फंडामेंटल, लर्निंग टू ट्रेन, लर्निंग टू ट्रेन, ट्रेनिंग टू कम्पीट, ट्रेनिंग टू विन एंड रिटायरमेंट. सो इन्होंने बेसिकली अपने पूरे फ्रेमवर्क को 5 से 6 ब्लॉक्स में डिवाइड कर दिया है. और वो कहते हैं कि रफली अबाउट 13 साल तक यू कैन नॉट टेल कि आपका जो बच्चे हैं वो उसमें उनको कोई एक पर्टिकुलर गेम खेलने में उनको द हाईएस्ट लेवल ऑफ ग्लोरी अचीव होगा. बट वो कहते हैं कि
6 से 13 साल तक इट्स सैम्पलिंग ईयर, बेसिकली यू शुड सैम्पल डिफरेंट स्पोर्ट, ज्यादा स्पोर्ट्स में एक्सपोजर दीजिए, जिससे इवेंचुअली दो चीज सामने आएंगी कि आपके जो चिल्ड्रन हैं वो किस चीज में अच्छे हैं, प्लस उनका किस चीज में इंटरेस्ट है। दोनों चीज बहुत जरूरी हैं सक्सेसफुल होने के लिए। अराउंड around 13 to 15 year is where you say specialization year। यहाँ पे जाके उन्हें ऑप्शन होता है जनरली किड्स के पास, whether they become more concentrated towards like other things like let's say study या something else, or they want to more specialize in one of the sports that they are playing। it doesn't need to be एक स्पोर्ट होना जरूरी नहीं है, दो भी हो सकते हैं, दो स्पोर्ट्स में भी स्पेशलाइज कर सकते हैं around 13 years। once you cross the 13 to 15 year, around that time you have to train to compete, because बहुत सारे ऐसे और बच्चे भी होंगे जिन्होंने उस स्पोर्ट को बस चूज कर लिया है, सो they are not training to compete, they are training to compete at the national level, they want to become the best in their country, so they can represent international। so around 15 years investment years start हो जाते हैं। basically the more time you are able to train, the higher your chances of sporting glory। so investment years start around 15 years for everyone, basically in any sport। after 15 you have to make a choice whether sports is a priority in your life or sports is just like something additional apart from your work, apart from your personal life। so around 15 we start concluding investment years। there was this research that came out, you have to train almost 10 years to become a professional athlete within your sport। so अगर आप देखेंगे कि जनरली कहाँ पे मोस्ट एथलीट अपनी ओलंपिक ग्लोरी या फिर वर्ल्ड लेवल पे मेडल को अचीव करते हैं, दैट एज जनरली कम्स अराउंड 23 to 28 years उनके लाइफ में। सो 8 से 10 साल जब तक आप उस गेम में इन्वेस्टमेंट करते हैं, आपके पास ऑफ कोर्स राइट स्पोर्ट होना चाहिए, राइट कोचेस होने चाहिए, राइट सपोर्ट स्टाफ होना चाहिए, आपका भी सीरियसनेस उस चीज़ के लिए सही होना चाहिए, देन ओनली यू गेट द स्पोर्टिंग ग्लोरी विद इन योर स्पोर्ट। जो सेकंड है बालियन हैमिल्टन एलकेडी मॉडल, इस मॉडल में उन्होंने बताया कि एज यू मैच्योर, सो मैच्योरेशन स्टेटस होता है, उससे आपका ग्रोथ रेट कैसे अफेक्ट करता है। तो अगर आप देख रहे हो तो पहले आप बहुत ग्रो कर रहे होते हो जब अर्ली एज में होते हो, फिर थोड़ी थोड़ी ग्रोथ कम हो जाती है। अराउंड 13-14 से लेके 16 तक देयर इज अ पीरियड जहाँ पे बहुत ही ज्यादा ग्रोथ होती है। सो उन्होंने अपने मॉडल में यही आउटलाइन किया है कि वो ग्रोथ पीरियड से आपको पहले क्या करना चाहिए, आपको ज्यादा स्किल पे फोकस करना चाहिए, थोड़ा स्पीड ट्रेनिंग पे फोकस करना चाहिए, और जब आपकी जो जो हाई मैच्योरेशन जो हाई ग्रोथ पीरियड आता है 2-3 साल का, जब जनरली चिल्ड्रंस हिट प्यूबर्टी और उनकी ग्रोथ बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है उस पीरियड में, तब आपको मे बी थोड़ा स्टैमिना पे फोकस करना चाहिए, थोड़ा ज्यादा स्पीड पे फोकस करना चाहिए। एंड वंस यू हैव क्रॉस्ड द होल हाई ग्रोथ एरिया, जब आपकी ग्रोथ रेट बहुत कम हो जाती है अराउंड 17 ईयर्स, अराउंड 16 ईयर्स, तब आपको अदर फिजिकल क्वालिटीज लाइक स्ट्रेंथ पे फोकस करना चाहिए। सो दे टेल कि अराउंड विच age band you should focus on what physical qualities। now the last model, the लॉयड एंड ओलिवर मॉडल, इन्होंने थोड़ा सा और भी ज्यादा कैटेगराइज कर दिया है फिजिकल क्वालिटीज को कि अकॉर्डिंग टू योर मैच्योरेशन स्टेटस, प्री प्यूबर्टल, सो प्यूबर्टी से पहले, सरकम प्यूबर्टल एंड पोस्ट प्यूबर्टल। सो इन तीनों फेजेस में आपको क्या क्या चीजों पे ज्यादा फोकस करना चाहिए। सो यू कैन सी इन द बुक्स कि वो कहते हैं कि पहले ज्यादा मोबिलिटी, स्पीड, पावर, स्ट्रेंथ फोकस करो। जब आप सर्कमफ्यूगर्टल हो सो मे बी मोबिलिटी, एफएमएस का स्कोर अच्छा हो आपका, स्पीड, पावर, स्ट्रेंथ, इन सब चीज़ों पे आपको ध्यान देना है। इवेंचुअली आप थोड़ा सा बॉडी मास गेनिंग पे भी ध्यान दे सकते हैं, हाइपरट्रॉफी। सो दे जस्ट गिव यू अ फ्रेमवर्क, एग्जैक्टली ऐसा करना भी नहीं है, बट आपको थोड़ा सा आइडिया देते हैं कि आपका फोकस कहाँ होना चाहिए उन एज बैंड में।
Okay. So one of the underlying principle of long-term athletic development is that हमको over time athletic qualities improve करनी है, but उससे हमें क्या benefit मिलने वाला है? First of all, जब आप अपने अपने जो जैसे आपके ओवर टाइम जो आप बॉडी में चेंजेस आ रहे हैं, उनको अगर पहले से आउटलाइन कर लोगे, यू हैव अ कोच टू टेल यू कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, उससे ये सारे फैक्टर्स प्रमोट होते हैं, जैसे कि यू विल ऑलवेज बी मोर हेल्दी एंड मोर फिट कंपेयर टू एवरेज पॉपुलेशन, यू आर लेस लाइकली। रिसर्च कहता है कि अगर इफ यू आर इनटू फिटनेस और इफ यू आर इनटू हेल्दी लिविंग, your chances of getting ill are low. So you you automatically reduce your downtime. Basically आपको छुट्टियां कम लेनी पड़ेंगी, आप ill होगे तो आप ill कम होगे तो आप basically important जो आपके लाइफ में इवेंट्स होते हैं वो मिस करने नहीं करेंगे. Second, your sports performance will be higher than compared to the mean age group, mean of your age group. Reduce in risk of injury. It develops confidence. One of the things that I would like to really underline here is that uh, if you are focusing on fitness or developing athletic abilities over time, you will always be very confident person within yourself. Generally, if you are training regularly, you're less likely to be very, very lean or less likely to be very, very fat. In both those cases, researchers has observed that people who are maybe very, very fat or very, very thin, they lack confidence in their day-to-day activities. Sometimes they skip things because उनके mind में ऐसा रहता है कि how others will perceive them. So if you are into fitness, or if you have a long-term plan of how you want to progress in your career, you generally have very high confidence within yourself, which is a very important thing currently. Okay, so why you should periodize your whole sporting and like technical and physical training since from your early ages? So it gives you a framework for success in sports. वो बताते हैं कि जनरली जो सक्सेसफुल एथलीट होते हैं या फिर जिन एथलीट्स की प्रोबेबिलिटी सक्सेसफुल होने की ज्यादा होती है, वो जनरली क्या करते हैं. Planned systematic progression to establish player development pathway. अगर if we are able to implement these stages within a, let's say, a sporting model of any sport or any training center, so उससे क्या होता है कि सबके पास एक क्लियर आइडिया होता है कि प्लेयर डेवलपमेंट पाथवे क्या होगा, कि हर एक साल बाद या हर 2 साल बाद what is the level you need to achieve to go into the next level. So आपको पता चलता रहेगा, let's say you started with 500 athletes in academy, 2 साल बाद maybe 300 athletes have achieved जो physical या technical आपने goal set किए थे. So you know that at least out of those 500 you have 300 kids whose chances of progression is very high. Maybe for the other 200 बच्चों के लिए you can recommend in some other sports. There is never an end for any sport. अगर early ages में you think your kid is not successful in one sport, there is always other sports in which they can excel. But having a systematic progression is very important. Athlete centered approach to sports. जब हम ऐसे मॉडल्स को अडॉप्ट करते हैं, उसमें every focus is on athlete, कि what is best for athlete. इस टाइम पे अगर हम उसको स्पीड या स्ट्रेंथ कराएंगे तो that is specifically catering to athlete. उसमें इंडिविजुअल डिफरेंसेस और यूनिकनेस भी पता चल जाते हैं, क्योंकि हमने पहले से गोल सेट कर दिए हैं. अगर कोई एथलीट लेट्स से बहुत ही अर्ली एजेस में पहले ही लेट्स से ही इज वेरी स्ट्रांग और शी इज वेरी स्ट्रांग और शी इज वेरी कार्डियोवास्कुलरली फिट, तो हमें पता चलता रहता है कि हु आर आवर आउटलायर्स, कि उस ग्रुप में सबसे अलग कौन है. सो उस चीज से भी हमें बहुत फायदा होता है. इंक्रीज द चांस ऑफ पॉजिटिव एक्सपीरियंस इन स्पोर्ट. जब भी हम किसी को पहले से कोई गाइडलाइंस दे देते हैं या फिर कोई टारगेट्स दे देते हैं,
those are sorry, those are like a marker for positive experiences. Generally athletes को अच्छा लगता है कि उनको पता होता है कि उनको कहाँ क्या अचीव करना है, so they are more likely to experience positive experiences. Long-term athlete development always encourages lifelong participation. So आगे जाके आपको दिखेगा कि अर्ली एजेस में वी द एलटीडी मॉडल्स बोलते हैं कि प्ले मोर देन वन स्पोर्ट और प्ले मोर देन टू स्पोर्ट्स. इवेंचुअली क्या होता है कि इफ यू प्ले लॉट ऑफ स्पोर्ट्स इन अर्ली करियर, you are more likely to stick with one or two sports throughout your life. और कोई भी इंसान जब किसी भी स्पोर्ट्स को इवन ऐसे कैजुअली भी अगर पूरे अपने जिंदगी खेलते हैं, तो आपने ऐसे जनरली नोटिस किया होगा अपने सराउंडिंग में, अपनी फैमिली में, एक्सटेंडेड फैमिली में, कि दे आर स्लाइटली on the fitter side of people. I'm not saying everyone will be very, very fit, but if you're even casually playing any sport, swimming, badminton, tennis, so you will lead a healthier life compared to others. So this module focuses on how to develop players as part of long-term process throughout childhood into adolescence. So jab right from, let's say, 6, 7, 8, 9 years to up till 18 years, it gives you a brief idea. So अब बहुत सारे LTD मॉडल्स होते हैं, उनमें से जो इफेक्टिव होते हैं, जो भी मॉडल बहुत इफेक्टिव होता है, वो किस चीज पे फोकस करते हैं? जनरली देयर गोल्स इज नॉट शॉर्ट टर्म. उनका फोकस होता है कि ये मॉडल अगर हम लोग अप्लाई करते हैं तो 10 साल बाद हम लोगों ने कितने सक्सेसफुल एथलीट्स उस मॉडल के थ्रू बनाए हैं. और कभी भी अर्ली सक्सेस पे हम लोग ज्यादा फोकस नहीं करते हैं, but we focus on what is best for sport participant throughout the life. Even most of the long term athletic development model, उनका गोल ये नहीं होता है कि 10,000 बच्चों में से एक बच्चा ओलंपिक चैंपियन बन जाए, बट गोल इसकी 10,000 में से 7,000 8,000 एटलीस्ट कोई स्पोर्ट अपने साथ रखें. रिमेनिंग 1,000 2,000 they become professional in their sports. And of course, when you encourage so much participation, eventually someone is bound to get the Olympic gold medals or the world championship medals. It also lays out activity and training according to specific ages and stages of development. तो किस स्टेज में आपको क्या फिजिकल एक्टिविटी भी करना चाहिए, ये भी एक इफेक्टिव एलटीडी मॉडल में आपको देखने को मिलेगा. All young people follow the same pattern of growth from infancy through adolescence. So हर मॉडल ऐसा नहीं कहता कि हर बच्चा 8 साल की उम्र से लेकर 18 साल तक सेम होगा. सो जो भी इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं ओवर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम दे सबसाइड. दीज आर द 10 की फैक्टर्स जो कि आपके मॉडल को इन्फ्लुएंस करते हैं कि फिजिकल लिटरेसी कितनी है, स्पेशलाइजेशन, वो मॉडल ज़्यादा स्पेशलाइज करता है कि नहीं करता है, उसमें जो डेवलपमेंटल एज है वो कितना आउटलाइन किया है, मेंटल, कॉग्निटिव एंड इमोशनल डेवलपमेंट, किसी भी एथलीट का जो किसी भी एज पे कितना मेंटली, कॉग्निटिवली या फिर इमोशनली वो डेवलप हो गए हैं, उन सब चीज़ों से उस मॉडल पे अफेक्ट होता है. पीरियडाइजेशन कैसा है, हाउ मेनी कॉम्पिटिशन्स वो मॉडल बोलता है कि आपको एक पर्टिकुलर एज में कितना कॉम्पिटिशन खेलना चाहिए. And of course, always remember that excellence takes time. No athlete is going to win medals at 16. So the focus of a long-term athletic development model is to encourage more participation. More participation will eventually lead to more medals. Not that आप 10 साल की उम्र से 4 athletes को पकड़ लो and you think the all 4 of them will become Olympic medalists. Sadly, it doesn't work like that. System alignment and integration, how does it align to, so हर मॉडल है, maybe एक मॉडल जो किसी कंट्री ने पहले अप्लाई किया है वो मे बी हमारी कंट्री के लिए एप्लीकेबल नहीं है, बिकॉज वी हैव टोटली डिफरेंट सिस्टम अलाइनमेंट. मे बी जो कोई मॉडल दूसरी कंट्री में यूज हुआ है, मे बी दे हैव वेरी फ्यू एथलीट्स. इंडिया इज 1.4 billion people, so we have to think
or we have to adapt that model according to Indian system. Continuous improvement, Kaizen. The only goal should be that you have to feel that you're going into the right direction. So if you see, जनरली क्या होता है कि हम, अगर आप जो लेफ्ट साइड वाला जो इमेज है अगर उसको देखेंगे, सो उसमें बताते हैं कि हम सबसे पहले किन किन चीज़ों पे फोकस करते हैं. राइट साइड में इस देखो, डेवलपिंग फिजिकल लिटरेसी फॉर लाइफ. एट द बॉटम इज एक्टिव स्टार्ट. बेसिकली हर 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 किड को हमको एक्टिव रखने के लिए उनको क्या करना पड़ेगा. सो कोई भी किड किसी भी एज पे खेलना शुरू कर सकते हैं. देयर आर अप्रोप्रिएट गेम्स फॉर एवरी एज. सो द अर्लियर you start any children into fitness or physical activities, it's better for them. Then there is fundamentals. Fundamentals में क्या होता है, उसके ऊपर next stage है learn to train. Learn to train है. उसके बाद after this age you have to make a decision कि what's your next goal, whether you want to go in professional life or you want to just become fit for life. So after this stage, one can choose to drop and make any sport just like a second option within their day-to-day life. Or if you choose, then this is competitive for life. You're choosing this path. Within this path, you have to go through certain stages. There is train to train stage, there is train to compete stage, and then there is very small stage, train to win. Basically, when you reach this very small train to win stage, you have basically devoted your life to become let's say a champion within your sports. Training to compete means you have turned professional within your sports. Train to train is you're trying to become a professional. Basically, from when I say कि आप अपने sport में professional बनने का कोशिश कर रहे हैं, that means you are trying to earn a living through sports. So these are how different stages look within a model. So the first three stages, they are what we say is like building a solid foundation. यहाँ तक हर किसी को choose करना चाहिए. उसके बाद you can choose to maybe keep sport as the primary focus of your life or even a secondary focus in life. And last three stages, these are called podium pathways. On the right side, you can see we start active starts, male and female, from 0 to 6 years. You can start anytime, whenever you wish to choose. The first stage, the first serious stage, fundamental stage, it starts about 6 to 9 for males and 6 to 8 for females. Then there is learn to train. So again, there's a difference for 9 to 12 for male and 8 to 11 for females. Train to train, again, a bit of difference between males and females. Then train to compete, and then train to win. And active for life, you can again, even if you have stopped playing any sport, you can again anytime choose to play, take up any sport as a hobby, as a casual time to time training. So आप लोगों ने अभी एक चीज नोटिस किया होगा कि there is a difference between the time to enter or exit a stage for male and female. That is because male and female का maturity period is different. So according to this, females mature maybe a year earlier compared to the male counterpart. So that's why they have early entrance to most stages. So that's why they have been given maybe a year younger girl can still do activities as much as a year older boy. So like I mentioned before in the previous slide, the first reality stages encourage physical literacy and sport for all. Basically, first three stages
हर किसी को एटलीस्ट एक बार एक्सपीरियंस करना चाहिए. Then the next three stages focus on excellence, basically the podium pathway, how to reach the podium, उसका pathway क्या होगा. So उसके लिए these are the three stages: train to train, train to compete, train to win. And the final stage encourages lifelong physical activity. To keep any community healthy, the easiest thing is that they are engaged in some physical activities. So first order, second order, and third order effect of physical literacy is very, very high. Active for life, competitive for life, fit for life, sport and physical activity leaders. So you can choose from many of these. So now we'll go through slightly deeper details of what happens in those every उस हर stage में क्या क्या होता है. So inactive start basically is development of general movement skill, कि आपको कैसे move करना है, how to put one feet in front of next, how to hang. जो बहुत lower level activities होती हैं उसमें हम यही सिखाते हैं कि no sedentary for more than 60 minutes except sleeping. जब भी बच्चे छोटे होते हैं you should encourage कि they move more. 1 घंटे से ज्यादा वो बैठे नहीं कहीं पे, जब जब एक्सेप्ट जब सो रहे होते हैं. जब वो सो रहे नहीं होते हैं नॉर्मली टाइम पे दे शुड मूव मोर बेसिकली. थोड़ी सी ऑर्गेनाइज्ड फिजिकल एक्टिविटी भी, जनरली दे आर अलाउड टू डू एनीथिंग. आप कुछ भी करो, आप खेलो, बाहर जाके खेलो, घर में खेलो, कहीं पे भी चले जाओ, बट थोड़ा सा उस चीज का पार्ट सम कुछ चीज ऑर्गेनाइज होना चाहिए सो दैट दे डेवलप कॉग्निटिवली भी. एक्सप्लोरेशन ऑफ रिस्क एंड लिमिट इन सेफ एनवायरनमेंट. सो एनवायरनमेंट सेफ होना चाहिए बट उनको खुद से थोड़ा सा रिस्क समझ लाना चाहिए बेसिकली. कि अगर आप मे बी लेट्स से 1 फुट 1 फुट ऊपर चीज से जंप करने की कोशिश कर रहे हैं, a kid's mind will perceive it as a risk, but in true honesty it's not a very big risk. So वैसे risk उनके cognitive development, emotional development के लिए important है. So like I said, exploration of risk within a safe environment. Active movements environment combined with well-structured gymnastics or swimming programs. So gymnastics and swimming is something that you can start very, very early. You must have seen photos of kids as young as 2 years old. They are able to swim for longer periods. So these are a couple of sports which can be started very, very early. Of course, as recreation, you don't need to train your kids 6 times a week in such sports, but once or twice a week is good for them for the development. Daily physical activities with an emphasis on fun. The most important part here is fun. Anything you do in the first 2 stages has to be fun, otherwise थोड़े टाइम बाद जो किड है they will start moving away from the sport. It's very important that they feel engaged in the sport. So और वो engaged तभी रहेंगे when it's fun. जनरली आप लोगों ने भी नोटिस किया होगा, जो बच्चे होते हैं उनका what do you say, उनका फोकस पीरियड बहुत छोटा होता है, लाइक लिटरली वेरी वेरी स्मॉल. वो आपकी बात सुन रहे होंगे और अगर उनको पसंद नहीं आया दे विल जस्ट टर्न अराउंड एंड गो डू समथिंग एल्स. सो जब तक उन्हें ऐसा लगता है कि आप जो करवा रहे हैं वो बहुत इंटरेस्टिंग है, इट्स फन, दे विल डू, वो करेंगे, वो एक्टिविटी में पार्ट लेंगे. बट द मोमेंट इट बिकम्स लाइक रिपीटेटिव और बोरिंग, दे विल नॉट टेक इंटरेस्ट इन दैट. एंड जब बच्चे बहुत छोटे होते हैं उनसे हम लोग ऐसे उनको समझा भी नहीं सकते क्योंकि वो लोग उतना कॉग्निटिवली डेवलप नहीं होते हैं. Now the second age, the fundamental age. In this age we focus on overall movement skills, general overall development, integrated mental, cognitive and emotional development, basics of athleticism. So basically ABCs of athleticism: agility, balance, coordination. So ऐसी चीजें जिनमें उनको ये सब चीजें ऑटोमेटिकली ट्रेन हो. हमें स्पेसिफिक वी डोंट नीड टू मेक अ सर्किट फॉर एजिलिटी और बैलेंस और कोऑर्डिनेशन, बट ऐसी चीज कराएं जिससे कि जिनमें कि ये फैक्टर ऑलरेडी ट्रेन हो रहे हो.
ABCs of athletics, running, थोड़ा running include होना चाहिए, थोड़ा jumping, throwing, wheeling for wheelchair sports, develop strength through use of own body weight. So इस एज में body weight is, आप body weight से कोई exercise करेंगे, squat करेंगे, run करेंगे, it's effective, it's very effective for them. So you can develop a lot of strength through body weight exercises, push-ups से, pull-ups से, plank से. These exercises are more than enough to tax the body of a 6 to 9-year-old kid. Introduce simple rules of fair play, ethics of sports. It's important because इस stage में जो आप सिखाते हैं that stays with the kid. So it's important कि वो समझे कि fair play क्यों जरूरी है, because at some point in life fair play उनके against भी हो सकता है. Some other person might not be fair, तब they might realize कि क्यों हर किसी को fair should emphasize on fair play, सबको fair play क्यों करना चाहिए, because you can cheat once or twice, but sooner or later someone else will also do the same to you. So वो negative experience को हटाने के लिए we should encourage more fair play, to be more ethical of sport. कुछ sports होते हैं, they have very strict rules of ethics. I will give an example. In judo you cannot protest. अगर आप mat पे हैं, the referee says it's a shido or wazari for any one of the judokas, there is no protesting. You cannot आप ऐसे गुस्सा नहीं हो सकते, आप कुछ भी बोल नहीं सकते हो. The moment you speak against a referee, you are out of the tournament. So for some sports is important, it's very important, like what are the ethics of sport, but in general we should encourage कि हर कोई समझे कि क्यों जरूरी है fair play और हर sport के ethics को समझना. Around this age the program should be well structured without periodization. We don't need to include like rest weeks or anything. इतना ही work करेंगे जितना कि उनका capacity होगा. Daily physical activities, still emphasizing fun. If you go further, so learn to train stage, even within this stage from male 9 to 1, female 8 to 11, this is the chronological and developmental age of males and females. इसमें भी हमको encourage करना चाहिए कि more than one sport, ताकि उनकी physical, emotional और cognitive development all around development हो, क्योंकि हर sport कुछ पर्टिकुलर चीजें वो फोकस करता है. सो अगर आप सिर्फ एक ही स्पोर्ट खेलते हो, यू मिस आउट ऑन सो मेनी अदर थिंग्स. सो अराउंड दिस एज यू शुड स्टिल बी प्लेइंग मोर देन 1 to 2 sports. Overall sports skill development. So this is again, like I mentioned, this is a major skill learning stage. All basic sports skills should be learned before entering puberty or train to train stage. So अगली stage enter करने से पहले आपको सारे बेसिक स्पोर्ट्स स्किल्स. तो बेसिक स्पोर्ट्स स्किल में क्या आता है? रनिंग, जंपिंग, थ्रोइंग, कैचिंग, लैंडिंग. सो ये सब चीजें आपको समझ आना चाहिए कि कैसे करते हैं. इवन दो आपके स्पोर्ट में लेट्स से देयर इज नॉट अ लॉट ऑफ जंपिंग, बट आपको पता होना चाहिए कि कैसे जंप करना है, कैसे लैंड करना है, कैसे थ्रो करना है. अगेन integrated within this stage also integrated mental, cognitive and emotional development, introduction to mental preparation. So अब because हम हमारे choice of sports are limited to maybe 1, 2 or 3, you need to learn the mental preparation of side, because now you are getting to stages जहाँ पे other person also may start to feel कि मैं आपसे better हूँ, या मुझे आपको उस गेम में थोड़ा सा बीट करना है. So there might be some scenario जहाँ पे you might be on the losing side. So how to prepare for that? या फिर maybe आपको जब आप ऐसा भी खेल रहे होगे, आपको इंजरी होगा, तो आप उस चीज को कैसे प्रोसेस करोगे, उन थॉट्स को कैसे प्रोसेस करोगे. तो इसलिए मेंटल प्रिपरेशन इज इम्पोर्टेंट नाउ. Develop strength through use of own body weight, medicine balls, Swiss ball. And if you start training strength training in this age,
it should be under the guidance of a certified strength coach. So अगर आपको strength training इस stage में start करना है, it should be under guidance. Otherwise, Swiss ball, medicine ball, resistance training, own body weight, they are good options to train under general technical skill coach. Further identification and development of talents. So इस stage में coaches are starting to see कि which athlete is more talented, not just in a sport, but generally who can jump higher, who can sprint faster, who can run longer, who can throw further. So ये सब चीजें coach देखने लग जाते हैं. Single or double periodization, so you should ideally try to compete one or twice in that year. ज़्यादा competition is not good at that early stage. Sport specific training three times per week. So अगर आप 2 या 3 sports choose करते हैं, उनकी 1 या 2 training करेंगे, तो total 3 से 4 session आपके होने चाहिए. नहीं, up to 3 session technical training के होने चाहिए. बच्चे कुछ they could be physical, fun, anything. Now you learn. Now you enter train to train stage. So this is slightly more sport specific training stage. So the first point itself mentions it. Sport specific skill development. So at this point you might have realized कि 1 या 2 sports हैं जहाँ पे आपके chances better हैं. Let's say you choose combat sports, but you might not know कि maybe wrestling or judo is better for you, or maybe you want to try fencing or boxing, anything like that, right? So यहाँ पे you have to develop sport specific skill now. Major fitness development stage, aerobic, speed, strength, is around this age you are going through a lot of growth. So you will realize there are a lot of changes within your body. Pubertal changes होते हैं. Generally within this stage आप peak height velocity भी observe करते हैं. Basically in 3 से 4 साल में the growth of your height will be the fastest at some point. Build the physical and mental engine, integrated mental, cognitive, and emotional development. Introduce free weights. So now around this time your body is much very capable of handling or taking stress through free weights. Your movements are more balanced, your movements are more coordinative. So introduction of free weights is a very good option right now. Develop ancillary capacity. So your cardiovascular system needs to be developed now, otherwise you will be not able to, let's say, lift weights or compete for a longer period. Frequent musculoskeletal evaluation during growth spurt. So musculoskeletal evaluation में हम यही देखते हैं कि what are the differences, कि आपकी flexibility कैसी है, आपकी range of motion कैसी है, इन सब चीज़ों में, ताकि आपके लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी और राइट साइड ऑफ बॉडी में कोई डिफरेंस ना हो, आपकी फ्रंटल एंटीरियर साइड और पोस्टीरियर साइड में कोई ज़्यादा डिफरेंस ना हो. ये सब चीज़ों के लिए बार बार फ्रीक्वेंट मस्कुलोस्केलेटल इवैल्यूएशन होनी चाहिए, मे बी 3 महीने में एक बार या 4 महीने में एक बार. टैलेंट आइडेंटिफिकेशन अगेन सेम, सिंगल और डबल पीरियडाइजेशन. स्पोर्ट्स स्पेसिफिक ट्रेनिंग 6 to 9 times over a week now, इंक्लूडिंग कॉम्प्लीमेंट्री स्पोर्ट्स. तो जितने भी आप स्पोर्ट खेल रहे हो उसमें 6 से 8 या 6 से 9 बार आपकी स्पोर्ट्स स्पेसिफिक ट्रेनिंग होनी चाहिए. बच्चे को जो 2 या 3 बार आप नॉर्मल फिटनेस ट्रेनिंग करें. So these are the last 2 stages, probably the most important stages for podium pathway. Train to compete. Now you are vying to become, let's say, the best in sport in your country or your continent. So sports events, position specific physical conditioning. So अब जो भी आप training करेंगे, that is very specific to what you are. Let's say if you are a freestyle wrestler, then the training would be for a freestyle wrestler or a Greco-Roman wrestler. Similarly, if you are judoka, you will have the training for yourself, for your body weight, because every body weight or हर sport में there are different categorization. हर weight category के लिए या फिर हर position के लिए there are some training which changes. So आपको वो ध्यान रखना है. More other things are same. Advanced mental preparation. At this point, there will be more losses than wins, because at the end of the day, if you realize, हर sport में can only be one champion. The rest, everyone has to deal with loss. So
mental preparation becomes very, very important. If you're not able to deal with losses, it's very, very hard to succeed in sports. Optimize and ancillary capacities, specialization, single, double or triple periodization. So इस एज में आप 3 कंपटीशन भी खेल सकते हो, 3 हाई लेवल कंपटीशन खेल सकते हो एक साल में. Sport specific technical tactical fitness training 9 to 12 times per week, same, but it's just more intense. Okay. So now this is the last stage, train to win. Basically you're a full-time professional, you're probably the best in your country. How do you take it to the next level? Maintenance or improvement of physical capacity. All these ages are sport specific and based on national and international normative data, which represents the average score for certain factor across various levels of performance, height, weight. Basically आप अपनी एज कैटेगरी में, अपनी हाइट और वेट कैटेगरी में कहाँ रैंक करते हो, वो जो डिफरेंस है वो कम करना है आपको. मॉडलिंग ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ कंपटीशन इन ट्रेनिंग. सो कंपटीशन में जाओगे तो आपको वहाँ पे कैसा खाना मिलेगा, या तो आपके ऑप्शन है कि आप वही खाना यहाँ पे खाने लग जाओ. बट लेट्स से आपका कंपटीशन हाई एल्टीट्यूड में है और आप इंडिया में ट्रेनिंग कर रहे हो, तो अब आपके पास आप ऑल्टीट्यूड तो नहीं बढ़ा पाओगे, या तो यू नीड टू गो टू हाई ऑल्टीट्यूड ट्रेनिंग सेंटर अगर इंडिया में कोई है तो. अदरवाइज यू माइट नीड टू गो देयर 2 weeks बिफोर, 4 weeks बिफोर टू अक्लिमेटाइज. तो आपको ये सब चीजें अब ध्यान रखनी पड़ेंगी. फ्रीक्वेंट प्रिवेंटेटिव ब्रेक्स, थोड़े थोड़े टाइम में आप थोड़ा सा ट्रेनिंग से टाइम ऑफ लें, अ वीक 4 days टू सी कि आपके बॉडी में कोई कमी तो नहीं है. स्पेंड मोर टाइम विद फिजियो टू सी maybe some muscle is getting overloaded, all that. Performance on demand. When you are about this age, or when you are the best in the country, every single time you compete there is a pressure of performance. Everyone is demanding performance because up until that point आपके फैमिली ने, आपके कोचेस ने, जो आपके स्पॉन्सर हैं, उन्होंने आपके अंदर इन्वेस्टमेंट की है. सो नाउ दे वांट टू सी द रिजल्ट्स. सो परफॉर्मेंस ऑन डिमांड. एवरी टाइम यू स्टेप ऑन द मैट, इन द रिंग, ऑन द फील्ड, देयर इज प्रेशर, performance pressure. Sport specific technical tactical and fitness training 9 to 15 times per week. So professional athlete might even have 15 sessions in a week. So अगर आप एक संडे भी ऑफ कर दें तो लगभग 5 से 6 दिनों में उनको 15 टाइम ट्रेनिंग करना पड़ सकता है. So that is again lot of physical load. And last is active for life. Within this stage we say minimum of 60 minutes moderate daily activity or 30 minutes of intense activity for adults. अगर आप 30 मिनट की कोई हाई इंटेंसिटी एक्टिविटी कर रहे हैं या 60 मिनट की मॉडरेट इंटेंसिटी एक्टिविटी कर रहे हैं, तो you will see कि आप for casually कुछ sports खेल सकते हैं. Transfer from one sport to another. You can choose different sports, highly competitive sports to lifelong competition sport. Low impact sport खेल सकते हैं. Embrace an active lifestyle by participating in organized sport that may be unfamiliar. अब ऐसे sports try करें जो आपने पहले नहीं खेला होगा. और अगर आप काफ़ी आपकी ट्रेनिंग काफ़ी ज़्यादा रेगुलर है तो आप अपनी एज कैटेगरी में खेल सकते हैं. जैसे मास्टर्स गेम्स होते हैं मोस्ट स्पोर्ट्स में. मास्टर होते हैं बेसिकली अबव अ सर्टेन एज. फॉर सम दिस एज इज 40, फॉर सम दिस एज इज 50. तो अगर आपकी एज उनसे ज़्यादा है तो आप उस कैटेगरी में खेल सकते हैं. और if you have trained for very long in your sport, you can become physical activity leaders. आप sporting federation में जा सकते हैं, coach बन सकते हैं to stay connected with sports. I will demonstrate. Yeah, okay. I will demonstrate this small video, which might give you a brief idea into how to progress exercises. So the lowest level exercise might be relevant for someone in the earlier stages, maybe stage 2, 3. As the athlete progresses through different stages, they might be able to do complex exercise. The guy in the left is my assistant Baneet, and both the athletes, the girl Kritarthi and the guy Arjun, they are fencing athletes. They are both international players, and I've taken their permission to use this video.
So I hope आप सब लोगों ने ये वीडियो देखा. So just to importance the to highlight the importance, अगर आप किसी भी एथलीट को डायरेक्टली किसी लेटर स्टेज में डाल दोगे, सर अगर मैं किसी कोई भी एथलीट या किड दे स्टार्ट डूइंग more complex exercise at the start, it will be harmful. Risk of injury will be more. So everything, if we can put it into stages, low level, low to medium, medium level, medium to high, and high level exercise, then it's better for athletes to learn and understand what are the challenges of each movement. I will show you one more video similar to this. So within these two videos, we are just trying to emphasize that there are the four major movements: press, pull, hinge, and squat. So how to progress through these exercises to a more complex exercises such as snatch, clean, and jerk. So it's important that we emphasize how to go through different stages to reach the eventual exercises, which are KPIs, like key performance indicator for most sports. Oh, yeah. So these are the, just a second. Yeah, so these are the references I've used to make this presentation. Most of the stuff that I spoke about today is being taken from these references. So if you go to these 7 to 8 references, you will be able to find all the content and probably more detail about what I spoke today to everyone. I think that's all from my side. These are my contact details. If anybody still has more questions regarding long-term athletic development, there's my phone number and my email. Thank you, everyone. Thank you, Dheeraj sir. I Thank would you. like to. Hello. Hello. Yes, sir. Sir, probably at this time we were supposed to take some questions, but I see none of the participants have taken up any questions. Like, Okay. none of them have given any questions in the question and answer section. Okay. So I'll be inviting our moderator, Dr. Narendra Gangwar sir, to conclude the session. Okay.
Hello. Hello. Yes, sir. Yeah. So participants, we request you, if you have anything to discuss, talk with our expert, please write in question answer section, or you can put into the chat. There's one question from Mr. Syed Muhammad Gulam. So how sports science works on under 16 children? Okay, so sports science is not limited to any age. Sports science can work for year 10 children, senior adults. So sports science give us guidelines कि what you should do. It's not ये जरूरी नहीं है कि जो स्पोर्ट्स साइंस कहता है हमें वो ही करना चाहिए, बट स्पोर्ट्स साइंस आपको रिस्क फैक्टर्स बता देता है, उन रिस्क फैक्टर्स को हटाना कैसे है वो बता देता है, बट अल्टीमेटली इट्स द चॉइस ऑफ हेड कोच एंड द सपोर्ट टीम to make any decision. Even let's say I talk about boxing, we have youth team in which there are several under 16. So there are differences, there are physical difference, there are physiological difference, there are emotional difference between under 16 athlete and the senior team. So we have data from senior team, we have data for youth team, we see ki kitna gap hai, we try to bridge that gap until the youth athletes come into the national camp. So हमारे पास दोनों लेवल हैं, हम लोअर लेवल और बड़े लेवल के बीच में डिफरेंस फाइंड आउट करते हैं और उस गैप को कम कैसे करना है उसके लिए रिकमेंडेशन देते हैं. हम ये नहीं बोलते कि अगर आप ये करोगे तो आप सीनियर नेशनल मेडलिस्ट बन जाओगे. हम बोलते हैं कि आप यहाँ पे हैं, लेट्स से आपकी स्ट्रेंथ 1.6 टाइम है बॉडी वेट की, सीनियर एथलीट्स की 1.9 टाइम्स है. अगर आप 1.9 टाइम स्ट्रेंथ पे चले जाएंगे तो देयर इज अ बेटर चांस ऑफ बिकमिंग अ मेडलिस्ट. ऐसा नहीं है कि आप मेडलिस्ट बनेंगे ही बनेंगे. सो गाइडलाइंस थ्रू स्पोर्ट्स साइंस we give more guidelines to everyone. Yeah, thank you. Would you please stop sharing your screen? Yes, sir. Please. Yes. Yeah, thank you. So now the next question is from BS Nirupama, like class 1 children, what type of strength exercise we can suggest? Okay, so class 1 children will be very, very young. I would suggest to make them participate in more activities. जितने ज़्यादा वो activities करेंगे, they will develop some sort of strength, some sort of fitness in every activity. But for my personal belief, class 1 would be, I would say, what age would be the 7-year-old? 7-year-old, you can start maybe bit of body weight exercises but from my experience, they will get bored very quickly. They will get bored in 10 minutes. 10 minutes ke baad they will realize, oh, we don't want to do this is boring. So probably a better option for them would be to set up a fun circuit within a room. बॉक्सेस के ऊपर से जंप करना, किसी चीज के नीचे से निकल जाना, किसी चीज को उठा के इधर से उधर रखना, इन सब चीजों से they will be more interested and they will develop some sort of physical strength. Yeah, thank you. Now the another very valid question is from Pawan Kushwaha, like para weightlifting players also doing the same weight training exercises or other recommendation for them? Okay, so this is a very good question actually. So what is a para athlete? Para athletes have some restriction within their bodies. So everyone has a category. So हम वो कैटेगरी चेंज ना हो जाए इसीलिए जो अफेक्टेड पार्ट होता है उसकी ज्यादा ट्रेनिंग नहीं कर सकते. बेसिकली लेट्स से अगर किसी पैरा एथलीट का एम्प्यूटेड आर्म है तो उससे पैरा एथलेटिक्स फेडरेशन क्या कहती है कि they are not able, their strength of this arm is reduced by 70%. But अगर through some exercises we make this arm stronger than the other arm, then उनके पास वो limitation नहीं होगा. So they won't be able to compete in the same category. So हम वो नहीं कर सकते. That's why we have to modify weight training for para athletes. It's very, very important. Yeah, thank you. The next question is from Mukesh Devi. So what kind of strength exercise for shooters under 14 age group can be recommended?
More exercises related to body weight exercise definitely. Plus, they also need to train more balance. How to stay balanced, how to stay focused in coordination exercises, more balance exercises, um, maybe more isometric strength training, wherein they don't move the weight, but they hold the weight at a particular angle. जिस पोजीशन में वो खड़े होते हैं स्पेसिफिक पोजीशंस में थोड़ा ट्रेनिंग ऑफ कोर्स जनरल स्ट्रेंथ ट्रेनिंग will help make them a better athlete, but to become a better shooter they need to do more balance training, more coordination training. Yeah, so thank you. Now the next question from Ahmed Mujtaba. If it is possible to share some chart guidelines, something, so you can recommend some site also. What I feel he wants to know some guidelines for different. Yeah. I don't know any site, but there is this very famous person, Brad Schoenfeld. He's one of the leading researchers of long-term athletic development. He's also the current head of the IMG Training Academy. It's the biggest training facility in the world. In USA, IMG Training Facility. He's the head of strength conditioning there. He has done a lot of research on long-term athlete development, how to progress their physical training. So Brad Schoenfeld is his name. If you go through his research, you will be much more clear in your thoughts about training. Yeah, thank you. The next question is like how to identify a training induced injury. So you have to see what muscles are getting injured repeatedly. So let's say if I'll give an example of what I work with. If there are boxers, they are getting more wrist injuries, then maybe I can make a case of there are a lot of impacts. The more time you do punch, you're more likely to put stress on the wrist, elbow, and shoulder. But first joint of contact is wrist. So if there is a lot of wrist injuries coming up in a particular cycle, we will need to speak with the whole sports science team and the head coach as to how to reduce this. Maybe we do thoda sa less training. But if there is injuries coming up in other parts, let's say hamstrings are not dominantly involved, but boxers sprints भी करते हैं, boxers jumps भी करते हैं, so उन सब चीजों में hamstring involved होती है. अगर hamstring injury ज़्यादा हो रहा है तो we need to look at things other than the boxing itself, कि उनका hamstring injury क्यों हो रहा है. या तो वो लोग लोड नहीं ले पा रहे हैं या फिर उनका टेक्निक गलत है स्प्रिंट करने का. So we have to find out the factors that lead to injury and then one by one try to reduce those factors or remove those factors. Yeah, thank you. The next question is from Veervani Jain. Sir, how much is sports activities for pre-primary students? I think the question is related to the strength exercises, like what kind of exercise can be given to pre-primary students? So what would be the pre-primary students' age? Like, I'm not able to understand what is pre-primary here. Like, yeah, pre-primary maybe like the students class 3rd, 4th, like that, no? Yes. Or so same. Like they should be doing at least 60 minutes of physical activity per day, and once or twice a week they should be doing more physical. But other days they could be doing like any sport training, which is fine. Ideally, more than 2 sports at that age. Yeah, maybe I think the question is they wants to know, like, what will be the duration and like if they're planning some activity, so what kind of like the duration they can have, something like that. If you go through one of the models, they say up to 3 times of technical training and then maybe 1 to 3 times of physical training. So generally when we say one session, it's generally up to 60 minutes. We like in normal terms we would say 60-minute के session is good for technical training. अगर आप कोई sports खेल रहे हैं, 2-3 sport खेल रहे हैं, तो अगर आप 1-1 घंटा उन sports में व्यतीत कर रहे हैं, it's good. That is a good marker to achieve.
Yeah, thank you. The next question is from Muhammad Ibrahim Loan. What should be the strength training for football beginners? Uh, Football training for beginners, body weight strengthening, good enough. If you want to progress them from body weight training, maybe you can use more complex exercises like we do stairs, because that's again body weight, but that's slightly more complex than just running or sprinting. Or if you have like a option of doing running on a hill, incline sprints is also a very good option. Different modality, uh, different avenues of increasing strength while being cardiovascularly fit also. So beginners level focus should be more on technical training, and then you find out what are the demands you're not able to meet through technical training, then you supplement that through physical training. Yeah, thank you. We'll take the next question is अगर कोई बच्चा उसका वेट बहुत ज्यादा है तो उसको कौन सा एक्सरसाइज कराना चाहिए या कौन सा गेम उसको खिलाना चाहिए? अनंत कुमार सिंह हमारे पार्टिसिपेंट So if it's just a weight उन्होंने thing, पार्टिसिपेंट है उन्होंने क्वेश्चन पूछा है. I would recommend talking to a nutritionist first, because what I've generally noticed is lack of activity is not the reason for not losing weight. Mostly it's the diet. अगर diet unhealthy रहेगा, you can do ज़्यादा training, weight तो उतना कम नहीं होगा, but you are more likely to get injured. और जब आप injured हो गए तो आप training वैसे ही बंद कर देंगे और then you will gain the weight again. So अपने ईटिंग हैबिट्स अगर आप चेंज कर सकते हैं या फिर ईटिंग हैबिट्स को थोड़ा सा ज्यादा हेल्दी कर सकते हैं, यू विल बी एबल टू लूज वेट इन अ बेटर वे, मोर सस्टेनेबल वे. Yeah, okay. So I'll take the next question. Participant Arif Ansari. So he wants to know maximum how many periods should be allocated to primary classes students? I am a big advocate of having Like maybe sports. in a week, how many strength training sessions? Yes, I'm big advocates of like physical activity sports. I believe like every kid should at least play some sort of organized sports once in a day. So if the school is able to outline a period, one single period every day for kids, it's good. But if your kid, अगर आप पेरेंट हैं, आपका बच्चा स्कूल में 1 घंटा गेम नहीं खेल पा रहा है, तो आप कोशिश करो कि आप शाम को उस बच्चे को एटलीस्ट स्पोर्ट्स खिलाओ. अगर मुझे पता है कि कभी भी इंडियन स्कूल्स में स्पोर्ट्स इज नॉट दैट बिग, सो मे बी हफ्ते में 2 गेम्स पीरियड होंगे आपके, बट बच्चे को जो 4 पीरियड आपको खुद से अपने बच्चों के लिए ढूंढने चाहिए. इवनिंग कोई ऑर्गेनाइज ट्रेनिंग में, या फिर यू कैन टेक देम स्विमिंग और समथिंग. Okay, so we'll take the next question. Like in school, children come in morning after breakfast. So can we give them some exercise during assembly? Ideally, you should keep like at least 30 to 45 minutes after meal time to start physical training, because if the food is not properly digestive and आप कुछ भी ज़्यादा intensity exercise करेंगे, you're more likely to vomit the food out. So ideally 30 minutes you should give. Hello. Yeah. Your network, maybe some network issues. Okay. No, I was saying after having morning breakfast, if the breakfast is light, then it's okay. But अगर normal full breakfast किया है आपके बच्चे ने, then you should give at least 30 to 45 minutes after that breakfast for the food to be digested. Yeah, okay. So we'll take the last question here. Mr. Rajkumar, he wants to know, like, he gets 2 period a week, that is duration of 30 minutes. So what Okay. type of sports can be given in short time, or like how they can plan the strength training session for the students? Ideally, you should focus on team sports, because team sports not just make you physically fit, it brings up a culture of being in a team environment. And जब आप team environment में होते हो, you learn a lot of things. आप दूसरों का behavior analyze करते हो,
अगर आप कैप्टन हो, वाइस कैप्टन हो, तो आपको लीडरशिप क्वालिटीज भी देखने को मिलती हैं. So team sports are always a good choice. Okay. So एक और क्वेश्चन है, आई थिंक इट्स कंटिन्यूशन विद द सेम. जिम जाने के लिए किस क्लास के बच्चे का परफेक्ट एज होता है? There is no age. If you see weightlifters, they start at age of 9. But it's not necessary that आपको 9 साल के बच्चे को जिम भेजना है. डिपेंड करता है कि आपका रिक्वायरमेंट क्या है. अगर आपका स्पोर्ट फिजिकली डिमांडिंग स्पोर्ट है, लेट्स से if it's a sport like athletics, you will need to start lifting around age 12, age 11. But if your sport is fencing, you may not need to lift weights until you're 16. But kabhi na kabhi between age 10 and age 18, you will need to start lifting weights because आपके sport के demand change हो गए हैं. जितना ज़्यादा demanding sport होगा, उतनी ज़्यादा physical training आपको करनी पड़ेगी. Track and field is the most demanding sport physically. Absolute power level, बहुत high power level, बहुत high speed level चाहिए. So you need a training program. Physical training is 60 or 70% of track and field. What we see on track or field events में, the technical training is very less, but physical training, high quality physical training is very important. Similarly for judo wrestlers, they need to do a lot of physical work. They get up in 4 in the morning, they go for a run, they come back, they do eat food, morning training session, then morning strength session, then evening training session. So depending upon your sport, you will need to find when you need to start supplementing your technical training with strength training. Yeah, okay. Now participants start getting a lot of questions, and then they keep on sending. So anyway, we'll take few more questions like Manika Agarwal from Chhattisgarh. So like the question is, कबड्डी players की strength training कैसे करेंगे, और अगर एज ग्रुप 12 to 16 years का उनके पास है? Strength training is best done in gym. There is no harm. Age 12 to 16 is a very safe age. Try to hire कोई accredited strength conditioning coach. अगर आपके पास finances हैं, it would be better. लोग क्या सोचते हैं कि why to spend on strength and conditioning coach, but downside क्या होता है कि आप एक तो अच्छी ट्रेनिंग नहीं करते हो, आप अपनी परफॉर्मेंस लेवल नहीं पहुंच पाते हो, और तीसरा होता है विदाउट स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कोच यू आर मोर लाइकली टू गेट इंजर्ड. आपको मे बी फॉर्म अच्छे से नहीं आएगा, तो आपकी इंप्रूवमेंट थोड़ी होगी, 5-6 महीने तक होगी, बट उसके बाद यू विल स्टॉल. आप एक जगह पे जाके रुक जाएंगे, आपको पता नहीं होगा कि आपको कैसे इंप्रूव करना है या फिर कैसे रिड्यूस करना है उस लेवल का, कॉम्प्लेक्स एक्सरसाइज का लेवल, तो आप अटक जाएंगे. So it's always a good investment to have a SNC coach with the team. Okay, thank you. So there are few questions related to diet chart and diet plan. So I think that is not relevant to the topic which we are Yes. delivering. So we'll not recommend those questions here. So Yes. Really sorry for that, participants. We will have a specific session on nutrition and balanced diet that we have planned those sessions. So आप उस दिन ये questions raise करिएगा. Definitely we'll get perfect the right answer from expert. Yes. So thank you. So here we'll stop the session, and thank you for very informative and knowledge session that you have delivered. As you can see in the responses of the participants, they are very happy with the session, and a lot of very basic questions that is physical education teacher or coach must know. So thank you, Mr. Dheeraj, for delivering such a wonderful session. Thank you on behalf of Ministry, on behalf of Sport Authority of India, and the entire organizing team of E-Khel Pathshala from Delhi, from Sai LNCP, on behalf of our principal, sir, Dr. G. Kishore, sir. I extend a heartiest thanks to you. Thank you once Thank you very much, sir. again for coming and joining and delivering such a session. Thank you. Yes, sir. It was a pleasure delivering the session for LNCP, sir. I know how hard you guys work to promote education, physical education in the country. So it's a pleasure for my side, sir. Yeah. Thank you so much. Thank you, sir. Thank you. Thank you everyone for joining in.
Yeah, please. Thank you all the participants for joining both the session of today's. We'll have classes for tomorrow also we'll have classes. So I would request everybody, please log in on the time. We'll have all the sports science subjects touching like basics, or some session will have a little advanced also. So we'll have a lot of ideas from our experts. So I would request, don't miss the classes and keep connecting with us. Thank you, everyone. We'll see you tomorrow. Same time, the morning session 11 to 12:30 and afternoon session 3 to 4:30 p.m. Thank you. See you again. Take care. Bye bye. Thank you, sir. Bye bye. Take care.